uh, इदानीं एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः यत् पठितं तस्य अग्रे यत् करणीयम् इति अहं इतः पूर्वं तत्र पठनसामग्रीरूपेण प्रेषितवान् अस्मि। मन्ये सर्वे तत्सर्वं पठितवन्तः। I hope all of you have studied what I had posted earlier as your study material. The study material posted uh, 2 days ago was all handwritten by me, and I had asked our participants to write down those whatever written there was in their own handwriting, so that they will thoroughly go through while writing. They properly read it, and so it will give a better understanding. I hope, लेखनसमये Mahodaya. स्व स्व मैक् म्यूट् कुर्वन्तु। अनन्तरं यदा लक्ष्मी शर्मा विषयति लिखितम् अस्तु ठीक। इदानीं तस्य विषये वयं चर्चां कुर्मः। तस्मात् पूर्वं एतावत् पर्यन्तं यत् पाठितं यत् किञ्चित् तस्य पुनरावलोकनं कुर्मः। इतः पूर्वम् अस्माभिः पठितं यत् प्रत्याहारसूत्रविषये, प्रत्याहारनिर्माणं कथं भवति इति अस्माभिः पठितं। प्रत्याहारसूत्राणि सन्ति, 14 सूत्राणि सन्ति। केचन जनाः पृच्छन्ति यत् एतानि सूत्राणि तत्र कण्ठस्थीकरणीयानि वा? कण्ठस्थीकरणं तत्र आवश्यकं। These 14 sutras should be memorized, and this will be very helpful for you in your studies in the Ashtadhyayi. And what is the easy way to memorize this 14 sutras? Once you start memorizing, you will find some difficulty how to do it. So I will tell you some technique. Like I had told you previously, that lut, lit, lut, like this, you can memorize. You don't have to memorize anything. They come into memory. रटनम् आवश्यकता नास्ति। ए ओ मध्ये स्थापयतु लकार टकारस्य मध्ये लट् लिट् लुट् लिट् लेट् लोट् आगच्छति लङ् लिङ् लुङ् लिङ् एवं तद्वत् तत्र प्रत्याहारसूत्रेषु माहेश्वरेषु सूत्रेषु किं करणीयं तत्र वयं किञ्चित् पश्यामि चेत् तर्हि दृश्यते यत् आरम्भे केवल स्वराः सन्ति अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ स्वरणे समस्या नास्ति एतदेव क्रमः अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ एतस्य क्रमः एते स्वराः एतत् अच् इति उच्यते अच् एते स्वराः एतत् स्मरणे किमपि समस्या न भवति you can memorize these ach this sarvarnan saralen तत् किमपि समस्या न भवति तदनन्तरं किमस्ति ह य व र ल एते वर्णाः किम् एते कस्मिंश्चित् वर्गे नास्ति ह य व र ल this 5 letters these do not belong to any group like kavarga chavarga tavarga etc. They do not belong to any group. So ha ya va ra la. Remember this. No problem. You can memorize it so easily. Thereafter comes the 5th letter of each word. Ya, ma, ga, na, na. The 5th letter. The Anunasi. Remember hereafter there is Anunasi. Ya, ma, ga, na, na. Then comes the 4th letter. Jha, bhai, gha, dha, dash. Jha, bha, gha, dha, dha. The 4th letter.
Then comes the third letter. Ja, va, ga, da, da. Then comes the second letter. Kha, fa, cha, tha, tha. Then comes the first letter. Ja, ta, ta, ka, pa. And lastly, sha, sha, sa, the three saka. So if you read these Maheshwar Sutrani in this way, you will find that they are easily memorized and you don't have to exert in memorizing them, exert your mind in memorizing. उनको रटनस्य आवश्यकता न भवति. एकवारम् अनेन प्रकारेण यदि भवान् पश्यति भवन्तः पश्यन्ति एतानि सूत्राणि कि कानि वर्णानि प्रथमे आगच्छन्ति अनन्तरं किं भवति, which are the letters coming first and which thereafter. If you see, read it like this, then all these sutras, 14 sutras, will be memorized very, very easily. And why I say that should be memorized? किमर्थमहं वदामि यत् एतानि सूत्राणि कण्ठस्थीकरणीयानि. यतः यदा कश्चित् एकः प्रत्याहारः, those who have not joined on time, nothing will be repeated. You have been told very clearly that this is class, you have to join on time, and whatever has been told till now, it will not be repeated. So this is once you have this, you have to be attentive in the class also. If you have joined on time and you are not listening properly, that is your fault. This, I will explain it once again. You keep on listening. यदा एते प्रत्याहार सूत्राणि सन्ति, प्रत्याहार सूत्राणि महेश्वराणि सूत्राणि, एतेषां कष्टस्थीकरणस्य एकः लाभः भवति. यदा कश्चित् प्रत्याहार पुरतः आगच्छति, यदा चिन्तयतु झल् प्रत्याहार, झल् प्रत्याहार आगतः, झल् प्रत्याहारे कानि वर्णानि सन्ति इति तदा प्रत्याहार सूत्राणि पश्यति किम्, अष्टाध्यायी उद्घाट्य महेश्वराणि सूत्राणि. अच्छा जी, गलती से आपका माइक म्यूट कर दिया हूं मैं, ऑन कर दिया. प्रत्याहारे सर्वे व्यञ्जनानि सन्ति. अच्छा ठीक. इदानीं श्रूयते? ठीक. माइक पता नहीं म्यूट हो गया, मैंने ध्यान नहीं दी. ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग व्हाट आई हैव टोल्ड. Since mic was mute, so many people could not listen. This pratyahar sutrani, pratyahar sutram किमस्ति? प्रत्याहार सूत्राणां कंठस्थीकरणं लभाय भवति. This is for your own benefit that you should memorize this pratyahar sutra. You really, what is the easiest way to memorize them? The easiest way to memorize them is just look what is the pattern of these letters. किं क्रमः अस्ति, कः क्रमः अस्ति वर्णानाम्. आरम्भे स्वरवर्णाः सन्ति अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ. अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ. एते वर्णाः स्वरवर्णाः. सामान्यरूपेण स्मरितुं शक्नुमः, तत्र समस्या नास्ति. This becomes your you can memorize them easily. So these are called ach. The swarvarnaah ete ach iti uchyante. A I U ri ri e o I au. ach varna santi. एतेषाम् एतत् क्रम एव भवति. तस्मिन् क्रमे एव एतेषां कंठस्थीकरणं करणीयं. You should memorize them in the same order as it is written, and it is easy, no problem.
And what is thereafter? Then starts the Vyanjan Varna. First, it is ha, ya, va, ra, la. These five letters. Which are these five letters? These are the five letters which do not appear in any group. Kavarg, chavarg, tavarg, te. Ha, ya, va, ra, la. You memorize them in this order. Ha, ya, va, ra, la. And then the fifth letter is the last letter of each group. Ya, ma, ga, na, na. The anunasik, the nasal uh, letter, which are pronounced through your nose. It is called nasal. Ya, ma, ga, na, na. These five letters come. Then comes the fourth letter. Jha, bha, gha, dha, dha. Then comes the third letter. Ja, ba, ga, da, da. Then the second letter. Kha, fa, cha, tha, tha. Then the first letter. Ja, ta, ta, ka, fa. And lastly, sha, sha, sa. The three sa. So if you see these sutras in this order, this can be easily memorized. You don't have to exert your mind in any, and it will remain in your memory forever. And when some uh, pratyahar comes before you, say jal, then immediately you will understand from the fourth letter, all the letters are coming. Starting from jha, bhai, jha, fourth, third, second, first, and sha, sha, sa. All the letters are coming within this pratyahar. You don't have to go into the Ashtadhyayi, open the book, and find out the pratyahar sutras to see what is jal. So, whatever pratyahar comes in front of you, immediately you can understand which are the letters within this pratyahar. So, it is always for your own benefit that you memorize these 14 sutras. This will be very helpful in our future studies because Panini has used these pratyahars extensively in his sutras. And most of the sutras which we will study in our we will further study, you will find that most of the sutras are carrying anyone some of the pratyahars. And we have said that he has used 41 pratyahars. So which are those we will say. There are two, three more pratyahars, but they are not from this from Maheshwar Sutra. They have been constructed differently. That when we will come to them, we will we will see how it is constructed. So now this pratyahar, we have seen two major pratyahar is there, which are used extensively and always we have to come across them. One is ach, another is hal. Ach, you have understood what is ach. Ach is the group of letters which are swar varnas. Ach te varnani santi. Ye swar varnani. A, U, D, E, swar varnani. Ach iti uchyate. Ach pratyahar madhye ete varna agachanti. All these letters, A, E, U, D, E, O, they come within the ach pratyahar. So they are called ach. Whenever the ach comes before you, you will you must understand that it means any of the letter in between this pratyahar. Yada ach pratyahara agachati bhavata puratah tada gyatavyam yat अस्मिन् प्रत्याहारे ये वर्णा सन्ति तेषु कश्चित् एकः वर्णः अत्र अस्ति अतः यदा वयं वदामः अजन्तः अच् अन्ते यस्य सः अजन्तः तस्य कः अर्थः अच् अन्ते यस्य सः अजन्तः अर्थात् अच् प्रत्याहारस्य किञ्चित् एकं वर्णम् अस्य शब्दस्य अन्ते भवति किञ्चित् एकं वर्णम् अस्य शब्दस्य अन्ते भवति इति अजन्तः तद्वत् हलन्त हलन्त किम् अस्ति हल प्रत्याहारः ह त आरभ्य अन्त पर्यन्तं हकारत आरभ्य अन्त पर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति ते हल इत्युच्यन्ते अर्थात् व्यञ्जनवर्णाः हलन्त हल अन्ते यस्य सः हलन्तः यस्य शब्दस्य अन्ते हल प्रत्याहारस्य कञ्चित् एकं
किञ्चित् एकं वर्णं भवति सः शब्दः हलन्तः इति उच्यते. Whenever we said halantah, halanta shabda, halanta word, what does it mean? That in that word, the last letter belongs to hal pratyahar. The end letter belongs to hal pratyahar. That means halanta shabda. हल प्रत्याहार किम अस्ति ह य व र य म ग ण न झ भ घ ढ ध ज भ ग ड ध ख फ छ ठ थ ज ट थ क फ श ष स इत्यस्य. तो सर्वत्र हल, अतः हल यदा एते वर्णानाम् उच्चारणार्थं पूर्णं लिखितं, परन्तु यदा तस्य प्रयोगः भवति तस्य अधः एकः चिह्नं दीयते. We give a mark at the bottom of the letter to signify it. This is hal. That is called hal chihnam. That is why it is called hal chihnam. At the bottom of the letter there is a cut mark. That is called hal chihnam. Why it is given? Because we remove the swar from it. It is in the Pratyahar Sutra. It is written fully. Ja, ba, ga, da, da. It is written like only to help you to pronounce it. It is including, because without the help of swara, you cannot pronounce it. So it has to be pronounced properly. In order to pronounce it properly, it has to be added with some swara. So a is there inside. A is there. So ka, ka, kha, ga, gha, vayam evam uchcharan kurma. Akar madhya bhavati. A is there inside that vyanjan, and otherwise you cannot pronounce it. But when we write it, we have to write it without the swara. So that cut mark below the vyanjan is so that it belongs to hal pratyahar. Swar prithakam, swara prithakah, hal varna prithakah. एवं द्रष्टव्यम्, एवं रीत्या लेखनीयम्. अतः अहं किञ्चित् प्रेषितवान् आसम्. केचन अजन्ताः अजन्ता हलन्ताश्च शब्दाः. अच् इति प्रत्याहारस्य किञ्चित् वर्णं यस्य शब्दस्य अन्ते भवति स शब्दः अजन्तः इति अच् अन्ते यस्य सः उच्यते. The word having any letter belonging to ach pratyahar at the end is known as ajant. Now let us see some examples. Like Rama. Ma, after ma there is a. When you varna vichhed bhavanta kritavantah, varna vichhedah kritavantah bhavanta. That's a exercise also all of you have done. How to analyze a word by separating the letters. We have seen it. So in Rama, what are the letters? Ra plus A plus Ma plus A. This is the word vichhed of Rama Shabda. Ante kim agachati? A. Ante agachati A. Atah Rama Shabda Ajanta. यतोहि अ अच् प्रत्याहारस्य एकं वर्णम्. अ इति अच् प्रत्याहारस्य एकं वर्णम्. A is a letter which is a part of ach pratyahar. So Rama is ajantah shabdah. परंतु यदा तस्य रूप निर्माणं भवति, प्रथमा व्यक्ति एकवचनस्य रूपं दत्तम् अत्र रामः, तो अकारान्तः. अजन्तः कीदृश अजन्तः? अकारान्तः. यतोहि अ अन्ते आगच्छति, अतः वयं वदामः अकारान्तः शब्दः. Because a is the last letter coming Rama, so we call it akaranta. Akarah ante yasya sah akaranta. It is further clarification. Prathama ajantah. Ajantah means any letter can be there from ach pratyahar. Which letter is this? Akarantah. That further classification. Akarantah ach pratyaharasya akarah ante agachyate akaranta iti uchyate. तस्य यदि रूप निर्माणं भवति
bracket, we have shown in bracket one by one. तत् लिखितमस्ति एक एक तस्य कः अर्थः प्रथमा विभक्ति एकवचने पूर्वम् अहं पाठितवान् अस्मि एष चिह्नस्य विभक्ति चिह्नं विभक्ति चिह्नं रामः इत्यस्य विभक्ति चिह्नं किम् एक एक दैट मीन्स प्रथमा विभक्ति एकवचन रामः विसर्ग आगच्छति एतस्य रूप निर्माणं कथं भवति एतदेव वयम् अग्रे पठामः किन्तु तस्मात् पूर्वम् आधार निर्माणं करणीयं कथं किमस्ति रामः तो राम अकारान्त शब्द अनन्तरं कवि अत्र यदा वर्णविच्छेदं कुर्मः तर्हि किं भवति क प्लस् अ प्लस् व प्लस् इ अपि अच् अच् प्रत्याहारः आगच्छति अतः अजन्तः शब्दः अच् प्रत्याहारे कः वर्णः इ वर्णः अतः इकारान्तः इति फर्दर् क्लासिफिकेशन् कवि अपि अजन्तः शब्दः अजन्त शब्दः अस्ति किन्तु अजन्त मध्ये तत्र अन्ते अच् प्रत्याहारस्य कः वर्णः अस्ति इकारः किं वदामि इकारान्तः तत् कविः इति प्रथमविभक्तिरूपं भवति पुनः भानु अत्रापि भ प्लस् आ प्लस् न प्लस् उ तत्र किं भवति भानु अन्ते किमस्ति उ अपि अच् प्रत्याहारस्य एकं वर्णम् उ इस् आल्सो a letter which comes within the ach pratyahar. So further classification is this is ukarantah shabda. प्रथम तो एते सर्वे अजन्ताः पितृ रि अपि अच् प्रत्याहारः आगच्छति अ इ उ रि अपि अच् प्रत्याहारः आगच्छति we will give you 10 minutes time before ending the class, so don't raise your hand in between. In the end, we will have some question answer. Then first you listen what I am saying. Rikarantah अस्ति अत्र यथा पितृशब्द रिकारन्तः किन्तु यस्य रूप निर्माणं भवति पिता इति भवति प्रथमा विभक्ति एकवचनं तो यद् अकारान्तः इकारान्तः उकारान्तः ऋकारान्तः एते सर्वे अजन्ताः शब्दाः यतोहि अ इ उ रि एते अच् प्रत्याहार मध्ये आगच्छति तद्वत् ए ओ अपि आगच्छति परन्तु एकारान्त ओकारान्त शब्दाः सामान्यतः न भवन्ति ऋ अपि स्वरः अस्ति ऋ स्वरः वेदे एव उपयोगः भवति ऋ ऋ ऋ स्वरस्य उपयोगः प्रयोगः वेदे भवति ऋ यत् अस्ति स्वरः तस्य that is used in Veda, not in our Sanskrit which we study now. So it has not been given. So we come across these four types of letters. Akarantah, Ikarantah, Ukarantah, Vikarantah, Ajantah Shabda. Ach Pratyahar, Ach Pratyaharasya Kimchit Varnam, Asya Shabdasya Ante Asti, Ataha, Ajantah. तस्य तन्मध्ये किं वर्णम् अकार अस्ति चेत् तर्हि अकारान्तः इ अस्ति चेत् तर्हि इकारान्तः उ अस्ति चेत् तर्हि उकारान्तः रि अस्ति चेत् तर्हि ऋकारान्तः इति उच्यते स्पष्टं पुनः तद्वत् शब्दानां लिङ्गः त्रयः भवन्ति पुल्लिङ्गः स्त्रीलिङ्गः नपुंसकलिङ्गः तो स्त्रीलिङ्ग शब्दाः किं सन्ति अजन्ताः स्त्रीलिङ्ग शब्दाः ये तो पुल्लिङ्ग शब्दाः आसन् राम कवि भानु पितृ एते अजन्त पुल्लिङ्ग शब्दाः तद्वत् स्त्रीलिङ्ग शब्दाः सीता मति नदी धेनु वधू मातृ एते स्त्रीलिङ्ग शब्दाः नियमः तदेव लिङ्गविषये कोऽपि नियमः केचन सन्ति किन्तु सामान्यतः लिङ्ग निर्धारणं लोकाश्रितः भवति generally the gender is as per the use in our language. It has no particular rule. So what is used in our language, so it is to be in our memory. I can, no one can give a rule that is, this type of words will be
feminine gender, this type of words will be masculine gender, and this type of words will be neuter. Whatever is used in our language, in Bhasha, that is called lokashrit, dependent on people, public, just conversation. So what has been accepted as a pulling, that will be used in masculine gender, and what has been accepted as a feminine gender, that will be used likewise. Similarly, everything. So, Sili Shabdaha, Yatha Shita, uh, तस्य पुल्लिङ्ग निर्माणं न भवति केचन शब्दाः सन्ति यस्य पुल्लिङ्गतः स्त्रीलिङ्ग भवितुं शक्नोति यथा ब्राह्मणतः ब्राह्मणी किन्तु रामतः स्त्रीलिङ्ग न भवति पुरुषतः स्त्रीलिङ्ग न भवति ते नित्य पुल्लिङ्ग शब्दाः सन्ति there are some words which are always used in pulling, they cannot be converted into string, but in Sanskrit there is a facility that you can convert some words from pulling to string. Yatha brahmanatah brahmani, pathakatah pathika, balakatah balika, like that. But there is some rules, but there are and there are something uh, some gender, some words which there is no rule. It has to be like that. There's a viksha, singha, singha ta singhini bhavati. तत्र भिन्न प्रत्यय इत्यादि योग युक्त भवति केचन भवति शक्नोति यथा अज means goat, male goat, and aya means female goat, like this. So that also happens, but certain words are there which cannot be converted. So similarly, ajantah napumsaklingaha, phala. Phala is the original word. Phala asti मूल शब्दः, मूल शब्दः तत्र अकारान्तः फ प्लस अ प्लस ल प्लस थ तस्य यदि रूप निर्माणं भवति प्रथमाविभक्ति एकवचनं फलं भवति अतः फलं दृष्ट्वा एतत् मकारान्तशब्दः इति मा चिन्तयतु फलं धनम् इत्यादयः एते नपुंसकलिङ्ग अकारान्तः शब्दः मूल शब्दः अकारान्तः यथा रूप निर्माणं भवति तथा प्रथमाविभक्ति एकवचने मकार आगच्छति फलम् इति रूप सिद्ध्यति कथं भवति एतत् वयम् अग्रे पठामः परन्तु पूर्वम् एतस्य सम्यक् ज्ञानं भवितुम् अर्हति पुनः हल् किमस्ति हल् अपि एकः प्रत्याहारः हल् प्रत्याहारस्य कश्चित् वर्णं कञ्चित् वर्णं यस्य अन्ते भवति यस्य शब्दस्य स शब्दः हलन्त इति उच्यते any word which is having a letter from hal pratyahar at the end, that is called halant. And how to recognize halant? That letter will have that cut mark at the bottom of. So every vyanjan, hal pratyahar, every letter belonging to hal pratyahar should have that cut mark at the bottom. Please listen it carefully. Every letter belonging to hal pratyahar shall have that cut mark at the bottom. If that cut mark is not there, that means there is a is inside. It is not hal. It is ajant. If ma is cut, yatha Rama, ma is there. If there is no cut mark below ma, that means a is there. So when we do one viched, a comes out and it becomes ajanta. परन्तु अत्र वयम् अग्रे पश्यामः we will see ahead that what kind of words are halant shabdaah, which are those words which are having hal pratyahar, any letter of hal pratyahar at the end, like pulling shabdaah, sugana, the one who counts very nicely, अच्छा गिनने वाला, good at counting, सुगण गण इति धातुः अस्ति तेन सुगण इति शब्दः उत्पद्यते अन्ते किमस्ति ऋण. You can see that there is a cut mark at the bottom of Rana. So Rana belongs to Hal Pratyahar.
यम गण हल प्रत्यय, तो इट इज हलंत शब्द। हल मध्ये किं वर्णं? णवर्ण, णकारान्तः इति उच्यते। यथा यदि यत्र अजन्ता शब्दाः सन्ति तस्य फर्दर् क्वालिफिकेशन् किं भवति? यत् अकारान्त अस्ति, अ अस्ति चेत् अकारान्त, इ अस्ति चेत् इकारान्तः, उ अस्ति चेत् उकारान्तः। तद्वत् हलन्त शब्देषु अपि भवति। ण अन्ते अस्ति णकारान्तः, तो तत्र किं भवति? सुगण, प्रथमा एकवचन सुगण इति भवति। देन् मरुत् तकारान्तः, त आगच्छति अन्ते, जैसे विंड इज द मीनिंग, तो त अन्ते तकारान्तः, त अपि हलन्त शब्द। यू कैन सी दैट देयर इज अ कट मार्क at the bottom, so this belongs to hal pratyah and halant shabdah. Then puna again which letter of hal pratyah? Ta, so we call it takaranta. So marut iti takaranta. The prathama vyakti ekvachanam kim asti? Marut. One by one it is given in bracket. So this is prathama vyakti ekvachan vibhakti chin. This vibhakti chin kim bhavati? Vibhakti chinnam kim bhavati? Etadapi द्रष्टव्य व्यक्ति चिन्ह। पुनः राजन नकारांत, नकारांत शब्द, तो न अस्ति अन्ते, न तत् तथा हल चिन्हम् अस्ति। राजन किमस्ति? हलन्त शब्दः। कीदृश हलन्त शब्दः? नकारान्तः शब्दः। राजन हलन्त शब्दः। राजन इज ए हलन्त शब्द। व्हाट काइंड ऑफ हलन्त शब्द? नकारान्तः शब्द। Yes, end letter is na of the this हल प्रत्याहारस्य। हल प्रत्याहारस्य न इति वर्णं यस्य अन्ते अस्ति। तो नकारान्तः। तो प्रथम व्यक्ति एकवचनं रूप किं भवति? राजा इति परिवर्तनं भवति। तद् वयं द्रष्टुं शक्नुमः, किञ्चित् परिवर्तनं भवति। तो एते कथं परिवर्तनं भवति? एते एषः व्याकरणस्य विषयः यद् वयम् अग्रे पठामः। तद्वद् विद्वस्, विद्वस् सकारान्त शब्दः, विद्वान् इति रूपं भवति। विद्वस् हलन्त शब्दः, सकारान्तः, विद्वान् इति। यदि विद्वान् शब्द पठित्वा नकारान्त शब्द मा चिन्तयतु। यदि you विद्वान् word when it comes before you, विद्वान्, don't think it is a nakaranta शब्द, it is sakaranta शब्द। पूर्व स अस्ति मूल शब्द विद्वस्। जैसे यथा प्रथमा विभक्ति भवति विद्वान् इति भवति, एतत् रूप तादृशं भवति। प्रथमा विभक्ति एकवचनं एते भवतः। अतः विद्वस् शब्दः सकारान्तः शब्दः, सकारान्त हलन्त शब्दः। यदा तस्य रूप निर्माणं भवति प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्वान् इति भवति। तस्य अर्थः एवं न चिन्तयतु यत् एतत् नकारान्त शब्दः, तथा न। It is not a nakaranta word, it is a sakaranta word. That is why I have given it here example. Similarly, stealing shabda, watch, same thing in stealing shabda. I have already told you that ling nidharanam, there is no rule. Whatever is accepted in the society, in the samaj, which letter, which word will be used in which gender, which is accepted by the by our society. That way it is to be used. It comes into our language. So there is no particular rule. So watch, it is stealing shabdah. Sarit, river, stealing shabdah. Seaman, nakaranta, tadvat yatha pulling shabde tattam tadvat stealing shabde halant shabdanam niyam tadvat evo. अन्ते तत् प्रथमा विभक्ति एकवचनस्य रूपम् अपि दत्तम् अस्ति, तत् पश्यतु। तो सीमन् नकारान्त, सीमन्तः सीमा इति भवति। यथा राजन्तः राजा भवति, सीमन्तः सीमा भवति। सीमन् स्त्रीलिङ्ग् शब्दः, राजन् पुल्लिङ्ग् शब्दः, उभयतर नकारान्तः। तो सीमन् स्त्रीलिङ्ग् शब्दः, राजन् पुल्लिङ्ग् शब्दः। एतत् भाषायां तदेव स्वीकृतम्। This is accepted in the language like that. There is no rule why Rajan is pulling and why Seaman is feminine, stealing. There is no reason for that. Lokashri.
That is Rajan Shabd Purling. It is when used in language. There is no rule behind it. Why Rajan is Purling and why Simon is Striling? There is no such thing. It is as used in the language. It is accepted like that. So we will have to remember it. Which so it comes through practice. When we start using the language in our day-to-day use, then slowly it comes. As you speak in English or in Hindi, you know which word is in which gender. You don't have to go into the grammar of the language to find out which word is which gender. It has come into your memory through practice. So same thing here also. Hanuta Shabda Napuksak Linga. In Sanskrit, there is one more gender that is neuter, Napuksak. So Jagat, Naman, Havis, Ityadyaha, Tadvateva, Nakaranta, Takaranta, Nakaranta, Sakaranta, Ete Napuksak Shabda, Tesa, Rupani, Itaucha. So Ete Santi. इदानीं अस्मिन् विषये कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नोति एतावत्पर्यन्तं यत् पठितं हलन्तशब्दः अजन्तशब्दः स्पष्टमस्ति पुनः एकवारं यत् मया प्रेषितं तत् पुनः एकवारं पश्यतु सर्वं स्पष्टं भविष्यति किमपि कठिनं नास्ति किन्तु एतस्य ज्ञानम् आवश्यकं यु मस्ट नो व्हाट इज अजन्तशब्द एंड व्हाट इज हलन्तशब्द बिकॉज otherwise you will not be able to construct the declensions, the रूप निर्माणं न भवति शक्यते यदि वयं न जानीमः कीदृशवर्णः कः लिङ्गः इति. Someone has raised a hand. One by one I will ask. One by one, just don't be hurry. Aruna. Harsha asked me. Oh, sorry. न किं नेम अस्ति नाम वदतु. अमिताभ. अमिताभ पृच्छतु. अमिताभ जी पूछिए. प्रणाम सर. हाँ नमो नमः. बताइए क्या पूछना चाह रहे. Should I speak in English? हाँ yes you should, so that others may also understand. So in the 14 Maheshwar Sutras, in the fifth one we see it is ha, ya, vara, and in the 14th one also we see hal. So how do we see the two has, sir? You don't bother about it right now. When we will, this will be explained later. Now there are two ha, that is correct. But why there is two? There is some reason for that, which right now cannot be explained. When you go some into advance, when you proceed in the Vyakaran, then slowly it will become clear why there is a two ha. But right now it is not necessary to understand why there is two ha. Okay, हल लकार पर्यन्तम् आगच्छति ह इत्यस्य यदा उपयोगः भवति एक ह is there is twice but it will be used once only. That's all. Okay sir. Now sir, there is one more thing. Yeah sir, after the first letters of the 5 Sparsh Vyanjanas have been taken up till the 12th Maheshwar Sutra, then we have Sha, Sha, Sa and Ha. So is there any rationale to understand these as well? Like these are out of those Sparsh Vyanjanas. So no, I could not understand your question. Like you very nicely gave us the rationale behind the positioning of the various letters in these 14 sutras. Like you told that the first 1, 2, 3 and 4, the first are about the swaras, then we have the vyanjanas, and then within the vyanjanas also we have the fourth, the fifth, then the fourth, the third, the second and the first one. So, but the Sha, Sa and Ha, which are there in the respective 13th and 14th Maheshwar Sutras, they are not a part of the proper Sparsh Vyanjanas. So, is there any rationale behind this as well? No, Sa has 3 types of Sa. So they have been put together. Sa, Sha, Sa. One is called Murdhanya Sha, one is Talava Sha, another is Dantasya. So all the 3 types of Sha has been put together and at the last. And again comes Ha. But the Ha again comes why, that is different issue. But in fact, Ha, it begins with Ha, ends with Ha. But end is Hal.
last letters in this is hal. But ha is appearing twice. Suppose I am telling you, but for the as you asked the question, uh, when we say hal pratyahar, then ha is coming twice. But it will be ha will be used once only. But say when we say jhal, then the ha in the beginning, if ha was there only in the beginning, then jhal pratyahar would not have ha. Panini needed ha in jhal pratyahar, so he gave ha once again at the last. Okay, sir. Okay. That's quite So deep, sir. Yeah. that's why Thank you. twice it is. Thank you. Sir, Thank you, sir. actually, sha, sha, sa, ha are the Ujma one. We can हाँ learn. एक मिनट who is speaking? Sindhuja. Yeah. हाँ now हाँ Sindhuja ask your question. What is this? हाँ I'm not asking. I'm just telling. Sha, sha, sa, ha are the Ushma one. We can learn that like that. हाँ These are yes, Ushma one. there that is different. But right now we are concerned about how to memorize this Pratyahar Sutra. For that I have given a technique that first the ach swaras, then ha ya va ra la, the five which do not come within any group. Then fifth letter ya ma ga da na, then fourth, then third, then second, then first, and lastly sha sha sa ushma varna. So you can easily memorize the 14 sutras that way. Now Shailendra, Mr. Shailendra, जी जी पूछिए आप जी क्या पूछना जी चाह रहे हैं? जी नमन। आपको बहुत बहुत नमन। हम ये जानना चाहते थे ये कैसे पता चले कि हल से है कि अच से है। जैसे सीता है तो ये अच से लगा है और हाँ ये जगत है ये हल से हल में है। तो ये हाँ कैसे इसको कैसे समझा जाए, इनमें अंतर क्या है? सीता में अंत में आ है उसको वर्ण विच्छेद करिए ना, स प्लस ई प्लस त प्लस आ, तो अंत में आ है तो अजंत है, और अगर अच्छा अंत में हल चिन्ह वाला है तो हलंत है। यही तो पहले समझाया। पुल्लिंग में जी और जी स्त्रीलिंग में बात वही है। सीता में जी बस ये है कि स्त्रीलिंग में क्या है कि ह्रस्व दीर्घ दोनों प्रकार के होते हैं। है स्त्रीलिंग में आकार ह्रस्वकार का कोई शब्द नहीं होता। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग में दीर्घकारी होता है, सीता राधा रमा इत्यादि। पुल्लिंग में ह्रस्वकार होते हैं, दीर्घकार के शब्द पुल्लिंग में बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते, होते हैं पर बहुत कम। उसका जब प्रयोग आएगा तब बताएंगे। सामान्यतः पुल्लिंग में ह्रस्वकार के शब्द पुरुष, बालक, राम, अर्जुन, कृष्ण सब ह्रस्वकार वाले। पर जो दीर्घकार वाले होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, सीता, राधा, कृष्णा इत्यादि। तो ये सब दीर्घाकार वाले होते हैं। तो वो लता, विद्या, ये सब दीर्घाकार वाले स्त्रीलिंग में होते हैं। और ह्रस्व अपना माइक पहले तो इको हो जा रहा है। तो ह्रस्वीकार में क्या होता है कि जैसे मति, यह ह्रस्वीकारांत शब्द है, परंतु यह स्त्रीलिंग शब्द है। कभी भी ह्रस्वीकारांत शब्द है परंतु पुल्लिंग शब्द है। कभी पुल्लिंग शब्द है, मति ही स्त्रीलिंग शब्द है। तो मैंने आपको बताया कि वो लोकाश्रित होता है। तो और उसके अलावा कुछ प्रत्यय भी होते हैं जो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। उन प्रत्यय के जोड़ने से वो स्त्रीलिंग भी शब्द बनते हैं। वो कुछ नियम भी हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। Those rules will be told later on. अच्छा, first thing I want to tell our participants that no one should leave the class before Shanti Path, because first of all you must know that what you are studying is a Shastra. Ashtadhyayi is a Shastra. This is a Vedanga. 4 Vedas. There is 6 Vedangas. Out of the 6 Vedangas, Shiksha, Kalpa, Nirukta, Vyakaran, Chand, Jyotish. Vyakaran. This is Vyakaran. Ashtadhyayi is Vedanga, part of the Vedanga. So what you are studying is a Shastra, Veda Shastra. So it is not an ordinary book you are studying. So you must we pay your respect after closing the study and then leave the class.
So no one should leave the class before Shanti Path. Please make it a point, because I have seen that many people are leaving the class before Shanti Path. So you must make it a point. So next, Mr. Partha Sarthi. Partha Sarthi, what you want to ask? नमस्ते महोदय. Namaste. अभी अजन्त अलन्त शब्दं ज्ञातवान् अस्मि. ज्ञानार्थं निजन्तः इत्युक्ते किं महोदय? अजन्तः निजन्तः. रीजन्तः किमपि न भवति. ओके. ऋकारान्तः भवति. रि अच् प्रत्याहारे अस्ति, अतः यस्य शब्दस्य अन्ते ऋकारः अस्ति तत् ऋकारान्तः इति उच्यते. ऋजन्तः न भवति. धन्यवादः महोदय. अन्य हर्ष दिलीप कुमार महोदय. धन्यवाद हर्षा आपका इको हो रहा है. एक महोदय. बार आप अपना प्रश्न लिख करके भेज दीजिएगा. आप माइक म्यूट कर लीजिए. राम मूर्ति महोदय. राम मूर्ति. नमस्ते महोदय. एक डोंट स्पीक. I am taking the name. I am calling the name. He should ask. Mr. Ram Murthy. You call my name and then other people just started to overlapping. Yes, That's why you are yes, ma'am. hearing the Yes, echo. please mute your. प्लीज बोलिए. Harsha, because that is my name, but you can call Harsh is fine. Harsh Padmanabhan. हर्ष पद्मनाभन. Harsh Padmanabhan. अच्छा. बोलिए. Okay, I have a simple question, and that is that we just say pratyahar. So pratyahar is ach, hal, or jash, or whatever. So those two varna between, like a beginning varna and end varna, between that, whatever the varna comes, those are the varnas we are considering. So that is what that is called pratyahar. Not the individual varna is a varna itself, right? Either ajanta or halanta. Yes. Yes. Okay. So my understanding is correct? Yes, correct. So hal means pratyahar. Hal shabdasya. There are only two types of words: ajanta and halanta. There are no three types. No, I'm Ajanta and halanta. Ajanta means it's ended at the end of the word. There is any one letter out of the ach pratyahar. It can be a, e, u, ri, anyone. And halanta means any of the letter of the hal pratyahar. It can be from her, starting from her to sha, sa, any letter. So which letter comes at the end, we can call it like that. If it is sa, then we call it sakaranta. It is na, we call it nakaranta. It is pa, we can call it pakaranta, like that. So, Dhanyavad, but Mahadev. words are only two types: ajanta and halanta. There is no third type. Okay. Okay. Dhanyavad. Another king Sarita. एक minute. This is name is I can't find this. Ramurthy. Ramurthy. Namaste Mohdaya. Ramurthy Mohdaya. Namaste Mohdaya. Namaste Mohdaya. Ramurthy Mohdaya. Sir, you have given that scientific technique for finding out the in-between words of pratyaya. Now the last anubandha or sangyak, is there any rule, sir, for having that na or ka or la, like that? No, Any anubandha. scientific- Anubandha means it will end with the letter Yeah, given. For that, is there any rule, sir? Any rule is there? कुछ नियम है क्या? No, rule means what kind of rule you are asking? No, for example, I, U, na is there, then rule ka is there, then cha is there, like that it comes. Is there any sequence or rule for that? No. Sangyak? No, this has been devised by Panini, so. Okay. Yes, sir, thank you. I just wanted the clarification. To remember, is there any rule or sequence? I just wanted to know. No, it is. You will have to remember that last letter which is given. Okay, sir. Okay. Which is given.
सर धन्यवाद महोदय धन्यवाद पदवाल हाँ सिंधुजा साई राम वदतु किं प्रश्नमस्ति? आं महोदय आई हैव 2 पॉइंट्स नाउ टू डिस्कस। अच्छा इसमें जो है विसर्ग सही वो क्या होता है? विसर्ग लेटर क्या किधर मिलता है? किसमें किसके इधर पाणिनि के 14 सूत्र में विसर्ग का हाल पोजीशन किधर है? विसर्ग विसर्ग इसमें नहीं आता। विसर्ग इसमें नहीं आता। विसर्ग एक चिन्ह है, वो हकार के स्थान वो कब होता है वो आप आगे पढ़ेंगे। अभी इसमें प्रत्याहार में जो वर्ण है वही है, विसर्ग इस प्रत्याहार के अंदर नहीं आता। विसर्ग अनुनासिक ये सब कुछ चिन्ह है जो किसी दूसरे वर्ण के स्थान में होता है। अनुनासिक होता है ना बिंदु, जो जिससे हम बिंदी लगाते हैं, ऊपर डॉट लगाते हैं ना बिंदी, जिसे हम अनुनासिक कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, जिसे अनुस्वार करते हैं। तो वैसे विसर्ग है, ये किसी दूसरे वर्ण के स्थान में होता है। ये इनका स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं, किसी दूसरे वर्ण के स्थान में वो आदेश होता है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी जितने वर्ण है केवल वही आपको याद रखना है। हाँ, पद वाला महोदय दूसरा पॉइंट हाँ बताइए। अभी ये इसमें नहीं है, मैं दूसरा पॉइंट में बोल रहा हूँ। अगले हफ्ते 20 में आपको एग्जाम है, तो अगले हफ्ते नहीं आ पाएंगे हम लोग। माने जो संस्कृत भारती एग्जाम है अगले हफ्ते 20 को। हाँ, संस्कृत भारती एग्जाम है आपका। हाँ, तो अगले हफ्ते 2 क्लास में नहीं आ पाऊंगा। अच्छा, नहीं तो वो आप मैसेज डाल दीजिए, यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं। वो तो आप नहीं आ पाएंगे तो अपना मैसेज डाल दीजिएगा कि फॉर दिस रीजन। Yes, me too. Even me too. हाँ, और कोई है किसी को क्वेश्चन? एनी अदर? No. I will be in their exam. अच्छा, तो जिनका एग्जाम है वो अपना एग्जाम दीजिए नेक्स्ट वीक। हाँ, इन द मंथ ऑफ अगस्त देयर इज ए एग्जाम ऑफ पत्राचार। Yes, on the 27th. Okay. के कोविड और शिक्षा, शिक्षा गुरुजी। हाँ, बताइए, ये राम लिखा है रा आ मा आ अकारांता, उसका रामः लिखा हुआ, ये क्यों? वो उसका प्रथमा विभक्ति रूप क्या बनता है वो दिया है, केवल आपके देखने के लिए, जान समझने के लिए। ये रामः शब्द जब आता है विसर्ग वाला, तो आपको पता चल जाए कि ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो राम मूल शब्द अकारांत पुल्लिंग है। उसी तरह से फलम मकारांत नपुंसकलिंग है, परंतु वह अकारांत शब्द है, मकारांत नहीं। तो यही बताने के लिए वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का एक एक रूप दे दिया गया है, केवल देखने के लिए कि इसका प्रथमा विभक्ति में रूप क्या बनता है। अकारांत शब्द है, इकारांत शब्द है, कहीं पर विसर्ग लगता है, कहीं पर नहीं भी लगता है। जैसे दीर्घ इकारांत शब्द है स्त्रीलिंग के नदी, इसमें कोई विसर्ग नहीं लगता। ऐसे ही मरुत, जो हल चिन्ह वाले हैं सुवर्ण मरुत, उनमें भी कोई विसर्ग नहीं लगता। तो यह सब धीरे धीरे आप लोग समझेंगे, यह केवल आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए बता दिया गया है। अभी उसके कारण में जाने की आवश्यकता नहीं। अभी जो चीज आपको समझना है मुख्य रूप से, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिकली इज व्हाट इज अजंत शब्द एंड व्हाट इज हलंत शब्द, एंड सर that should be clear in your mind, what is ajanta and what is halant, then we can proceed further. So today we will end our class. Any other question? Anyone? Hello. Hurry up. Padavala, sir. I am first timer from Hyderabad. I am very glad to go my relative. 50 years back, I am revisiting. It's a revision for me. Okay. Yes, sir.
Any mute your mic now. भ्राता मम एकः प्रश्नः अस्ति सखी Okay. शब्द Now, पुल्लिङ्ग वा any other स्त्रीलिङ्ग वा want to ask any question? सखी प्रणाम शब्द आचार्य। Yes, Acharya. भ्राता Padavala, it is okay. मम प्रश्नः अस्ति महोदय। हाँ, किं नाम वदतु? एकः प्रश्नः महोदय संध्या। Mr. मम Padavala, your question has been answered. Now, next, anyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रणाम Please आचार्य। mute your mic. सखी शब्दस्य लिङ्गः का अच्छा, Please, your name, please. अनसूया Ask your question. What is? सखी सखी शब्दस्य लिङ्गः का पुल्लिङ्ग वा स्त्रीलिङ्ग वा सखी इकारान्त सखी शब्दः Ikaranta, Sukhi. सखी सखी Suddenly, don't go beyond what I have taught you right now. No, Sakhi he Shabd, said I have not written Sakhi Shabd. Ikarantas are Strilinga. No. Don't ask out of the context question. Ask only question what I have given you the material. Out of that, if you have to ask anything, please ask them. I have not given you Sakhi Shabd, so don't ask. No, but you said all Ikarantas are Strilinga, no? No, that is Sakhi Shabd is a different issue. That has many things there. गुरुजी, That is pulling, stealing. गंध New शब्द issues are there. That cannot be explained at this stage. आचार्य। इसका अर्थ क्या है? अस्तु महोदय धन्यवादः Now I am closing today. Tomorrow we will meet again. महोदय मम प्रश्नः एव आचार्य लास्ट अस्ति। क्वेश्चन। गंध का क्या पुनः श्वः भविष्यति प्रश्नोत्तरं यत्किमपि अस्ति यद् विशिष्टम् अस्ति अच्छा श्वः tomorrow you will keep with you a red pencil and black pencil. We will see how we will see what is the Adhikar Sutra and how this sutra is studied, how this sutra is marking is done in Ashtadhyayi. Because we have to proceed in the Ashtadhyayi, we have to understand what is we have studied type of sutras, and now our next class we will study those type of sutras and see how this is going to be done. So now we are closing the class. I am doing the Shanti part. Madhuri Marathe, are you present in the class? Madhuri? आम् अस्मि आचार्य अस्मि। Shanti part kar. Shanti part. जी आचार्य। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शान्तिः 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 नमो नमः आचार्य धन्यवादः नमो नमः। धन्यवाद महोदय। सभी लोग हेलो नमो नमः सर्वेभ्यो धन्यवाद आचार्यः नमो नमः धन्यवादः महोदय धन्यवादः नमो नमः धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद धन्यवाद महोदय शुभदिनं मिलामः। जिसको भी जो भी प्रश्न पूछना है 8 बजे से 8:05 तक चैट बॉक्स ओपन है। आप मैसेज कर अपना क्वेश्चंस मेंशन कर सकते हैं चैट बॉक्स में व्हाट्सएप के ग्रुप में। धन्यवाद सर्वेभ्यो नमो नमः।